Hello friends, welcome to Radhika Biology channel once again. Today we are going to discuss 30 most expected questions with complete explanation from biotechnology and its application. So please go through all the questions with answers. Here comes the first question. The correct order of steps in polymerase chain reaction is extension, denaturation, and annealing, extension, denaturation, denaturation, extension, denaturation, annealing, and extension. Polymerase chain reaction is important technique which is used in biotechnology. और किस लिए करते हैं ये? This PCR is done for the amplification of DNA fragment. अब ये PCR जो एम्प्लीफिकेशन साइकिल है ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करती है. फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? It is heating of target DNA to high temperature resulting in separation of two strands. हमारे जो DNA के 2 strands हैं, due to this high temperature ये दोनों strands separate हो जाते हैं into single strand. सेकेंड इज एनीलिंग, जिसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स ये सिंगल स्टैंड से एनील करते हैं और हाइब्रिडाइज करते हैं सिंगल टेम्पलेट डीएनए से. एंड लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन, इन विच दिस single strand DNA is extended and further amplification is done. And the main enzyme which is used in this PCR is Taq DNA polymerase. क्या करता है ये? DNA synthesize करता है DNA between primers and it extends each of this to DNA stranded segment lying between the two and it is copied. The DNA is copied means it is amplified. So the option D, that is the PCR involves denaturation, annealing and extension. Now second, which one of the following bacteria has found extensive use in genetic engineering? Genetic engineering है क्या? It is a process of using recombinant DNA technology to alter the genetic makeup of an organism, and it is very important application of biotechnology. So genetic engineering में कौन सा ऐसे बैक्टीरिया यूज करते हैं हम? इन ऑप्शंस आर क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, second is Xanthomonas citri, third is Bacillus coagulans, and fourth is Agrobacterium tumefaciens. So this Agrobacterium tumefaciens, it is extensively used in genetic engineering experiment. और ये कहाँ से मिलता है हमें? This Agrobacterium tumefaciens, it is causative agent of crown gall disease, and this disease has been recognized in recent years as it is caused by DNA plasmid, that is TI plasmid, and this TI plasmid is used as genetic engineering vector. So answer D, that is Agrobacterium tumefaciens, is correct. Next, DNA fragments are negatively charged, second is neutral, third is either positively or negatively charged depending upon the size, and fourth is positively charged. हमारे जो DNA fragments हैं वो कैसे होते हैं? They are negatively charged. अब हमारे DNA हमें पता है किससे बना होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस. एंड ये फॉस्फेट ग्रुप जो क्या, फॉस्फेट ग्रुप ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज. Next, a gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, जो कौन सा ऐसा जीन है जिसका एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने में? दैट इज वेक्टर, सेकंड इज प्लाज्मिड, थर्ड इज स्ट्रक्चरल जीन एंड फोर्थ इज सिलेक्टेबल मार्कर. हम कुछ जीन्स हमारी ऐसी होती है जिनको हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, बिकॉज दे हेल्प इन सिलेक्टिंग द होस्ट सेल्स व्हिच कंटेन वेक्टर्स एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो ये सिलेक्ट करने में मदद करती है हमारी वो सेल्स जो कि वेक्टर्स कंटेन करती हैं. सो द आंसर डी, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर, इज करेक्ट. नाउ फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड? कौन सा ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है? That is SAL1, EcoRV, Rho1 and Hint3. So हमें पता है कि SAL1, Rho1 and Hint3, these restriction enzyme produces sticky ends. So only EcoRV is the restriction enzyme which produces blunt ends. So answer B, that is EcoRV, is correct.
The tag DNA polymerase enzyme is obtained from, कहाँ से मिलता है हमारा tag DNA polymerase? First Bacillus subtilis, second is Pseudomonas fetida, third is Thermus aquaticus and fourth is Thiobacillus pyroxidans. ये हमारा tag DNA polymerase enzyme हमें पता होना चाहिए. This enzyme is very important because it is used in polymerase chain reaction. That is PCR is done to amplify the DNA. So this tag DNA polymerase is used in PCR. और ये कहाँ से मिलता है हमें? Thermophilic bacterium Thermus aquatus से. अब ये thermophilic bacterium से मिलता है हमें. अब there is reason this tag polymerase is used in PCR क्योंकि ये thermostable enzyme है that can withstand prolonged incubation at high temperature, that is 95 degree centigrade, without significant loss of activity. इतनी high temperature पे भी इसकी activity खत्म नहीं होती है. So this is the reason this tag DNA polymerase is used in PCR. A single strand of nucleic acid tagged with radioactive molecule is known as vector, selectable marker, plasmid और probe. Probe क्या होते हैं? Probe are single stranded radioactive molecules of nucleic acid. Single stranded radioactive molecules हैं nucleic acid के जिनका हमें sequence पता होता है. So these probes are having complementary sequence to the genes that are identified. They bind to a particular gene segment and because of radiation we can identify a particular segment. Therefore, this is the reason that these probes are used as identification tool. हम इन probes को identification tool की तरह use करते हैं because ये desired gene segment से bind करती हैं and because of radioactivity we can identify a particular gene segment. So answer D, that is probe, is correct. Agarose is extracted from seaweeds. It is used in spectrophotometry, tissue culture, PCR and gel electrophoresis. अब हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेन टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? हमारे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड दिस इज डन थ्रू द एग्रोस जेल. दिस एग्रोस is a natural polymer which is extracted from seaweeds and it is used as matrix. So this agarose is commonly used for gel electrophoresis. Next, which of the following is used as vector for cloning genes into higher organism? कौन से हैं? पहला है baculovirus, second is salmonella, third is rhizopus and fourth is retrovirus. So retrovirus in animals, इनमें ऐसी एबिलिटी होती है, they can transform normal cells to cancerous cells. We have transformed these pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans. So these retrovirus are the vectors which are used for cloning genes into higher organisms. Next, manipulation of DNA in genetic engineering become possible due to discovery of, जो हमारा डीएनए का मैनिपुलेशन जो हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसकी वजह से पॉसिबल है? दैट इज फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम है दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर. सेकंड इज डीएनए लाइगेज. लाइगेज हमें दो सेगमेंट्स को जोड़ने के काम आता है, दैट इज थर्ड इज ट्रांसक्रिप्टेज एंड फोर्थ इज प्राइमेज. सो मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए का मैनिपुलेशन किससे करते हैं? दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. These enzymes are very important as they digest the DNA and they create characteristic sets of fragments, and these fragments can be further isolated by electrophoresis. And these restriction endonucleases are also known as molecular seizures, and they cut DNA at specific sites. एक particular site पे DNA को cut करते हैं जिसकी वजह से they can be further this is the reason they are also known as molecular seizures. Next, use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is, जब ऐसी बायो रिसोर्सेज जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती हैं और वो कंसर्न कंट्री से परमिशन नहीं लेती हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट बायो इन्फ्रिंजमेंट, बायो पायरेसी, बायोडिग्रेडेशन एंड बायो एक्सप्लॉयटेशन. सो दिस बायो पायरेसी है क्या कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज
जिनका अपना पेटेंट करते हैं वो दूसरी से ऑथराइजेशन नहीं लेती कंट्रीज से, एंड दिस इज नोन एज बायोपायरेसी. Next, for transformation, the microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of, जो माइक्रोपार्टिकल्स हैं जो जीन गन में हम यूज करते हैं वो किससे कोट करते हैं? फर्स्ट इज सिल्वर और प्लैटिनम, सेकंड इज प्लैटिनम और जिंक, थर्ड इज सिलिकॉन एंड फोर्थ इज गोल्ड और टंगस्टन. सो जो हम जीन में जो जीन गन में जो पार्टिकल्स यूज करते हैं उनको कोट करते हैं गोल्ड और टंगस्टन से. Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? Adenosine deaminase deficiency जो एक 4-year-old girl में थी, इसमें कौन सी थेरेपी दी गई थी? फर्स्ट इज जीन थेरेपी, सेकेंड इज कीमोथेरेपी, थर्ड इज इम्यूनोथेरेपी एंड फोर्थ इज रेडिएशन थेरेपी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज जीन थेरेपी. अब जीन थेरेपी है क्या? जीन थेरेपी एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं एक जीन का जो डिजीज कॉज कर रही है, एंड इट इज डन इनटू नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन. सो हम जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको निकाल के हम नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन डालते हैं जिससे कि हमारी जो डिजीज है वो खत्म हो जाती है. सो दिस वाज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन deaminase deficiency. This enzyme is very important for the immune system to function. The deficiency of this enzyme can lead to severe combined immunodeficiency disease. So this gene therapy is the correct answer. The two polypeptides of human insulin are linked together by, दो polypeptide chains human insulin की किससे linked है? First is covalent bond, second is disulfide bridges, third is hydrogen bond and fourth is phosphodiester bond. So human insulin, as we all know, it is made up of 51 amino acids, and these amino acids are arranged in two polypeptide chain. कौन सी? Alpha chain, A chain that has 21 amino acid and B chain that has 30 amino acid. और दोनों polypeptide chain कैसे interconnected है? By disulfide bridges. So answer B is correct. Next, the introduction of tDNA into plants involve, जो हमारा tDNA हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट इज एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, सेकेंड इज अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, थर्ड इज इन्फेक्शन of plant by agrobacterium tumefaciens, and fourth is altering the pH of the soil, then heat shocking the plants. So answer C is correct, that is infection of plant by agrobacterium tumefaciens. हमने पहले भी पढ़ा था कि TI plasmid, that is agrobacterium tumefaciens, it is very effective as a vector for gene transfer. एक प्लांट से दूसरी जगह जब हमें जीन ट्रांसफर करनी है, so this agrobacterium tumefaciens is widely used, and the TI plasmid is transferred into plants and it is known as tDNA. जो part transfer होता है that is known as tDNA. So answer C is correct. In BT cotton, the BT toxin present in plant tissue as prototoxin is converted into active toxin due to first action of gut microorganism, second is presence of conversion factors in insect gut, C is alkaline pH of insect gut, and fourth is acidic pH of insect gut. In BT toxin plant में जो BT toxin present है plant tissue में वो prototoxin कन्वर्ट होता है एक्टिव टॉक्सिन किसकी वजह से? दैट इज एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट. हमारा बैसिलस thuringiensis क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, दैट इज टोबैको, बर्डवर्म, मॉस्किटोज, फ्लाइज, एंड दिस आल्सो फॉर्म सम प्रोटीन क्रिस्टल्स. These protein crystals are very toxic insecticidal protein, and this toxin does not kill the bacterium.
because it exists in inactive prototoxin. So this inactive prototoxin, once an insect ingests it, it is converted into active form. कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एल्कलाइन पीएच है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू active form of toxin. So the activated toxin binds to the surface of the midgut epithelial cell and create the pores that cause swelling and finally cause the death of the insect. So insect की कैसे death करता है? क्योंकि ये हमारा जो alkaline pH है alimentary canal में, ये convert करता है inactive prototoxin को active form of prototoxin, and this एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटोटॉक्सिन बाइंड्स टू द एपिथेलियल सेल, और उसके बाद ये बाइंड करने के बाद ये पोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, एंड फाइनली हमारे जो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, कौन सा ऐसा फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो आरडीटी से प्रोड्यूस हुआ है? दैट इज फर्स्ट इंसुलिन, एस्ट्रोजन, thyroxine and progesterone. So answer A is correct, that is insulin. अब हमारे recombinant DNA technology हमें पता है it is the most important technology which is involved in biotechnology, that is recombinant DNA. Now this has wide application क्योंकि recombinant DNA it is used for curing various disease. So this in 1983, American company first prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin, and then they were introduced in plasmid of E. coli to produce insulin chain. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इंसुलिन चेन में क्या होता है, एक तो A चेन है एंड B चेन है, एंड दे आर produced separately and extracted and by combining disulfide bonds to form human insulin. So this insulin was the first hormone which is produced by recombinant DNA technology. Now next, which of the following BT crop is being grown in India by the farmer? BT कौन सा ऐसा crop है जिसको Indian farmers grow कर रहे हैं? First is brinjal, second is soyabean, third is maize, and fourth is cotton. So option D, that is cotton, is correct. बीटी टॉक्सिन अभी हमने डिस्कस किया था. बीटी टॉक्सिन जीन्स हमें कहां से मिलते हैं? बैसिलस thuringiensis से, एंड these genes are incorporated into several crops like cotton. So the choice of genes depends upon the crop and the targeted pest, and these are insect specific. So the toxin coded by the gene is known as cry. जो toxin हमें gene code करता है, that is known as cry, and cry 1AC and cry 2AB, these are incorporated in toxins. So cotton. So this cotton is the crop which is used by the farmers. Next, RNA interference involves first synthesis of cDNA and RNA using reverse transcriptase. Second is silencing of specific mRNA due to complementary RNA. Third is interference of RNA in synthesis of DNA. And fourth is synthesis of mRNA from DNA. RNA interference होता क्या है? RNA interference is the phenomena of inhibiting activity of a gene through production of both sense and antisense RNA. So RNA interference ऐसा phenomena है जिसमें हम activity of gene को inhibit करते हैं, किससे? Sense and antisense RNA. And RNA, this takes place either in eukaryote organism as a method of cellular defense, and this method is specific and it is known as mRNA silencing. So B answer is correct, that is RNA interference involves silencing of specific mRNA due to complementary RNA. Next, the first clinical gene therapy was given by for treating first diabetes mellitus, second is chickenpox, third is rheumatoid arthritis, and fourth is adenosine deaminase deficiency.
सो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कौन सी डिजीज को क्योर करने के लिए दी गई थी? दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. Gene therapy, it is a collection of methods that allows correction of gene defects that has been diagnosed in child or embryo. तो जीन थेरेपी किस लिए यूज होती है कि हमारी बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो कि जीन के वजह से, पर्टिकुलर जीन की वजह से हो रही है. तो अगर हम जीन में करेक्शन करेंगे तो दैट डिजीज कैन बी क्योर्ड, एंड दिस इज डन particularly in child or embryo. So here क्या करते हैं हम? Here the genes are inserted in the person's cell and tissue to treat a disease. Now the correction of genetic defect involves delivery of normal gene into individual or embryo to take over the function of non-functional gene. So this was first done in 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is very important for the immune system. हमें पता है ये adenose deaminase deficiency में क्या होता है? Adenose, this enzyme adenose deaminase, it is very important for the immune system. और इसके डिफेक्ट की वजह से ये डिजीज हो रही है. सो पहला हमने जीन थेरेपी जो की गई, that was done in 4-year girl with this disease. So answer D is correct. What is antisense technology? Antisense technology क्या है? First, when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop the expression of a specific gene. Second, RNA polymerase producing DNA. Third is a cell displaying a foreign antigen used for the synthesis of antigens. And fourth is production of somoclonal variants in tissue culture. Antisense technology, so first answer is correct, that is antisense technology involves when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop the expression of specific gene. तो हमारे स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन जब हमें स्टॉप करना होता है तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को यूज करते हैं टू stop the gene expression, and this is known as antisense technology. Next, the TI plasmid is often used for making transgenic plants. The plasmid is found in, अब TI plasmid हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स. मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स है जहां हम पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफर करें एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, because we want to see the effect of a desired gene. So the plasmid is found in Azotobacter. Second is Rhizobium of the roots of leguminous plants. Third is Agrobacterium, and fourth is yeast as 2mm plasmid. अभी हमने पढ़ा था सबसे जो important plasmid है, that is TI plasmid, and it is found in Agrobacterium tumefaciens. So answer C, that is Agrobacterium, is correct. Next, ELISA is used to detect viruses where the key reagent is. ELISA में कौन सा ऐसा reagent use होता है? That is, पहला है alkaline phosphatase, second is catalase, third is DNA probe, and fourth is RNases. ELISA क्या? What is this ELISA? It is enzyme linked immunosorbent assay, and it is the test which is done to diagnose AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. AIDS को जो हम diagnose करते हैं किस टेस्ट से? That is ELISA. So this ELISA is based on alkaline phosphatase. This alkaline phosphatase and peroxidases are commonly used enzymes which are used in ELISA test. And these, क्या इसका principle क्या है? These are based on antigen antibody complex. ये antigen और antibody bind करके antigen antibody complex बनाते हैं, and that complex is detected by this ELISA, and we can say a particular person is suffering from AIDS or not. So option A, alkaline phosphatase, is correct. Next, the term humulin is used for hydrolytic enzyme, powerful antibiotic, third is human insulin, and fourth is isozyme. Humulin हम किसके लिए use करते हैं? That is used for human insulin, that is C. Human insulin, this is the first therapeutic product which is formed by recombinant DNA technology on July 5, 1983. The first transgenic crop was, कौन सा पहला transgenic crop है? That is tobacco.
cotton, pea and flax. So first transgenic crops, हमें पहले ये जानना है कि transgenic plants होते क्या हैं. Transgenic plants are those plants in which a foreign gene has been introduced and it is integrated into the host DNA. The first transgenic plant produced was tobacco, that is Nicotiana tabacum. A gene resistant to PPT, an active ingredient of herbicide, was isolated in this Medicago sativa. So the पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो बना था that was tobacco. ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं उस प्लांट में because we want to see the expression of a particular gene into the host DNA. The transgenic animals are those which have, transgenic animals कौन से होते हैं? First, which have foreign RNA in all its cells. Second, foreign DNA in some of its cells. Foreign DNA in all its cells, and these both A and B. तो पहले तो हमें ये देखना है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म is one that has become transformed following the introduction of novel genes into its genome. It is most frequently achieved by integration of cloned DNA sequences following their injection into the fertilized egg. This fertilized egg further divides to form the whole organism, and this organism will carry the transfer gene. Now the transfer genes are known as transgenes. So हमारे transgenic animals ऐसे और animals हैं जिसमें हम novel genes transform कर रहे हैं by using recombinant DNA technology. So the transgenic animals are those which are having the foreign DNA, जो हम बाहर से DNA को insert कर रहे हैं in animals में using the recombinant DNA technology. Next question, which of the following vector is used to replace the defective gene in gene therapy? कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि रिप्लेस करता है डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? दैट इज एडिनोवायरस, सेकंड इज कॉस्मेट, थर्ड इज आरआई प्लाज्मिड एंड फोर्थ इज टीआई प्लाज्मिड. सो जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी इज द करेक्टिव थेरेपी दैट इज गिवन टू पेशेंट्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय सम जीन डिफेक्ट्स. जीन थेरेपी ऐसी थेरेपी है, कहाँ देते हैं? कुछ जीन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं वो पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट की वजह से होती हैं. तो जीन थेरेपी से हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर जीन को दूसरी जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे उनका जीन डिफेक्ट खत्म हो जाए एंड वी कैन that disease can be cured. So here the genes are inserted into the person's cell and tissues to treat a particular disease by replacing the defective gene. So answer A, that is adenovirus, is correct. Next, genetic engineering has been successfully used for producing. अब genetic engineering से हम क्या क्या बनाते हैं? First, transgenic mice for testing safety of polio vaccine before use in humans. Second, transgenic models for studying new treatments for certain cardiac disease. Third, transgenic cow which produces high fat milk for making ghee. And fourth is animal like bulls for the farm work as they have superpower. So transgenic animals, these many transgenic animals, they are designed to increase our understanding of how these genes contribute to the development of disease. So this today transgenic models exist for many human disease like cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and transgenic mice has been developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. So this transgenic mice ऐसा है जिसको हम पहले humans से किसी humans को देने से पहले we are testing everything on the mice, that is transgenic mice, and these transgenic mice are used to test the safety of polio vaccine. हमने polio vaccine पहले human पे try करने से पहले transgenic mice में try करी थी. So the genetic engineering has been successfully used for producing transgenic mice. Answer A is correct. Next, some of the characteristics of BT cotton are, BT cotton plant की क्या characteristic है? That is long fiber and resistant to hepates, medium yield, long fiber. Third is high yield and production of
toxic protein, and fourth is high yield and resistance to bollworm. So answer option D, that is high yield and resistance to bollworm is correct, because BT toxin genes हमने कहाँ से isolate किया था? Bacillus thuringiensis से, and this is incorporated into the cotton plant, and therefore this plant is known as BT cotton. Now this BT cotton has particular characteristic, that is it is pest resistant, second it is herbicide tolerance, third is high yield, and this BT cotton most important characteristic, it is resistant to bollworm infestation. So answer D is correct. Now which of the following is now being commercially produced by technological procedures? कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर से प्रोड्यूस हो रहा है? फर्स्ट इज निकोटीन, नेक्स्ट इज मॉर्फिन, थर्ड इज क्यूनिन एंड लास्ट इज इंसुलिन. हमने पहले भी पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी से सबसे पहले हमने इंसुलिन प्रोड्यूस किया था. बायोटेक विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस इंसुलिन इज commercially produced, and this insulin was having two chain, that is A and B, and they are linked by disulfide. So please subscribe my channel and press the bell icon so that we can bring similar videos for your revision of NEET 2020.